National education policies are developed in the light of international as well as local context. So international context में पिछले कुछ सालों में एक important development हुई है, that is of the World Education Forum. इस मॉड्यूल में हम World Education Forum को देखते हैं, कैसे डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ, इसके आर्टिकल्स क्या है. The World Education Forum is an activity of global education community led by UNESCO, World Bank and other international organizations. The purpose of this forum is to review global situation of education and set future education directions. In April 2000, the global education community came together at the World Education Forum in Dakar, Senegal, and reaffirmed the vision of the World Declaration on EFA, Education for All, adopted 10 years earlier in Jomtien, Thailand. Key declarations: World Declaration on Education for All in 1990, Dakar Framework of Action 2000 and Education 2030. ये 2015 में ये declaration आया है. World Declaration on Education for All, also known as Jomtien Declaration, is the first global level commitment to provide quality basic education for all children, youth and adults. The declaration was outcome of the World Conference on Education for All held in Jomtien, Thailand in 1990. इसके आर्टिकल्स क्या थे एजुकेशन फॉर ऑल के, इसको हम डिटेल में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अभी तक एजुकेशन फॉर ऑल ये जो मूवमेंट है ये चल रही है. अभी तक पूरी दुनिया में सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में नहीं जा पाए. तो जो वर्ल्ड एजुकेशन फोरम है इस नाम से तो 2000 से ये ऑनवर्ड इसको दिया गया है, लेकिन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो 1990 में हुई थी इसमें एजुकेशन फॉर ऑल it emerged and it was the declaration of education for all. So इस मॉड्यूल में हम EFA के आर्टिकल्स को भी देख रहे हैं. Article 1, meeting basic learning needs. Every person, child, youth and adult shall be able to benefit from educational opportunities designed to meet their basic learning needs. Focus is every person, child, youth and adult. तो जब हम नेशनल लेवल के ऊपर अपनी एजुकेशनल पॉलिसीज बनाएं, we need to consider this international aspect कि पाकिस्तान is also the signatory of EFA declaration. So national education policy should be focusing on providing education to every child and every person. Article 2, shaping the vision. An expanded vision is needed to meet the learning needs of all learners. हर लर्नर की लर्निंग नीड कुड बी डिफरेंट. मे बी किसी एक बच्चे की लर्निंग नीड जो है वो न्यूमरेसी की ज़्यादा है, किसी दूसरे की लिटरेसी के हवाले से ज़्यादा है, किसी तीसरे की मे बी साइंटिफिक लिटरेसी के हवाले से है. सो हर बच्चे की नीड डिफरेंट है और आपकी पॉलिसीज़ को हर बच्चे ऐसा बनाया जाना चाहिए कि हर बच्चे की नीड को एड्रेस किया जाए. द विजन शुड सरपास present resource levels, institutional structures, curricula and conventional delivery systems while building on the best in current practices. Article 3, universalizing access and promoting equity. Article 4, focusing on learning. Useful knowledge, reasoning ability, skills and human values need to be focus of education. Article 5, broadening the means and scope of basic education. Early childhood care, primary universal education, supplementary educational programs for children with no formal schooling, awareness of social issues and social actions need to be focused in basic education. So education for all means basic education for all. कुछ बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं they are learning there, लेकिन जो बच्चे स्कूलों में नहीं हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनकी एजुकेशन के भी इंतजामात किए जाने चाहिए. Enhancing the environment for learning. Article 6,
Article 7, strengthening partnerships. State has obligation to provide basic education to all, but it cannot do it alone. It should build and strengthen partnerships to achieve the purpose. प्राइवेट सेक्टर के साथ, NGOs के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ देयर शुड बी पार्टनरशिप डेवलपमेंट, ताकि जो हर बच्चे को तालीम मिल सके, हर बच्चे की जो ज़रूरियात हैं तालीम के हवाले से, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा जा सके. सो if there is stronger partnership between different organizations and government, then there are more opportunities to achieve the target of education for all. Next article देखते हैं. Developing a supportive policy context. The provision of basic education for all depends on political commitment and political will, backed by appropriate fiscal measures and reinforced by educational policy reforms. Article 9, Mobilizing Resources. Existing and new financial and human resources, public, private and voluntary. कि कुछ लोग voluntarily भी काम करना चाहते हैं. Those resources should also be mobilized along with other resources. Article 10, Strengthening international solidarity. All nations have valuable knowledge and experiences to share for designing effective educational policies and programs, and they need to be considered. World Education Forum is a platform for global education initiatives. The target of EFA has still not been achieved, and World Education Forum is making all efforts to help the nations achieve the target. जो अभी हमने आर्टिकल्स देखे वो EFA के आर्टिकल्स थे, लेकिन पूरी दुनिया में ये आर्टिकल्स अचीव नहीं किए जा सके, ये टारगेट्स अचीव नहीं हुए. वर्ल्ड एजुकेशन फोरम इज पुटिंग इट्स एफर्ट्स कि ये वाले जो टारगेट्स हैं इनको अचीव किया जा सके, एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशनल policy makers to incorporate these elements and make policies which can help in achieving EFA targets.